Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Govinda 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 Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Shri Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya. So you guys can check this video out on YouTube by Janvi Harrison. The video is also extremely interesting and well made. The concept of the video, so it starts with her kind of waking up in the middle of the night or late night in some city with skyscrapers in Europe or USA, probably Europe, looked like Europe, I think.
So in Europe, she wakes up in the middle of the night and is just awakened by this wish to remember and chant about the divine. And and of course, she's in Europe and not in Vrindavan, where she would like to be. But just through the magic of devotion, well, and a coincidence, of course, if it's the middle of the night in Europe, then obviously it is early morning or Brahm Muhurat in Vrindavan. So, and so what happens is she starts chanting, and at the same time, there are gopis in Vrindavan who are just waking up and going about their morning devotion duties with the temple and all of that, and joining in her as a chorus. So they're separated by space, of course. She's in Europe and they are in Vrindavan. But she sings one line and the chorus comes from Vrindavan. So even though they are separated by space, they are not separated in time, and they are not separated in their devotion and love for divine and love for the oneness and love for all that there is. So they are connected in that way, and so the song goes on. And every time she sings, the chorus comes from Vrindavan. And every move that she makes in dancing, the gopis in Vrindavan are also dancing, and magically and coincidentally, the same moves that she is doing, the gopis are also doing. And eventually she sits down in meditation, and yes, the gopis also sit down in meditation, and so on. The idea is that even though they are separated in space, they are not separated in time, and they are also not separated in their connection with the divine spirit, with the divine spirit of oneness. So it's a very beautiful concept. So check it out. Govinda Jaya Jaya Janvi Harrison on YouTube. I don't want to play it because if we play it and record it, we're going to get a ding from YouTube and from copyright and this and that. So check it out on your own. But now that you know the concept, you will enjoy this even more, because not everyone gets it. Everyone just thinks someone is dancing, somebody's singing. But no, it's not just that. It's this connection with Vrindavan and the gopis in the ashram and in the temples, which makes this song even more beautiful than it is. So ultimately, it's that oneness. So this was one of the songs that we did at Hriday Sammelan last Saturday when we were all in Bangalore. This was one of the songs after the Mahamantra chant. We went into this particular dhun, which is such a beautiful composition. And so yeah, but the interesting story about Hriday Sammelan was we were three musicians, including Medu, Mahendra Karkera. You know him. All of us know Medu. So Medu and me, myself, and two of the other percussionists, Sudarshan and Raj, we were all leaving from the Mumbai airport for Bangalore, and then a 4-hour car ride to the ashram where the Hriday Sammelan was taking place. So it was a kind of early morning flight. For whatever reason, Medu, who was bringing the cajon for our performance, was a little late. And even though it was just a little late, it was enough for us not to be able to check the cajon in to baggage. And so if he had left the cajon behind, he could have joined us, but without the cajon, we would have missed something. So we needed both the cajon and Medu. So he had to wait behind and take a later flight, which was 5 hours later. So we took that first early morning flight, and Medu took the flight that was 5 hours later. And given that it was 5 hours later, he would have been either missing the whole performance if it happened,
and or he would have joined in at the tail end of the event, just the tail end. So that would have been, but we said, well, that's better than nothing. So he came in a later flight. So, so the, the Sudarshan and Raj, of course, who were with me, were like, oh my God, we missed the flight. We don't have a con. How are we going to do this? And what's going to happen? And our performance and our show and this and that. And oh gosh, we're only all that, all that. And I was like, hey, this is what it is. Just we we are okay with whatever it is. This is what is happening right now. And it's only just what is happening. There's nothing else that needs to happen. This is perfect the way it is. And we stayed in that space of okayness. I mean, Sudarshan and Raj are young kids. One is only in 12th standard, Sudarshan, and Raj is only 1 or 2 years older. So they are kind of, kids. So, of course, they were a little more than a little worried and kind of that we are missing our percussionist in the performance. So that was a little bit, but it was okay. We went ahead and we reached the ashram, and we were supposed to go on stage at about 6. We got there around 4, and a lot of things were not. Yeah, Jai Gurudev, Nitya Samadhi Sadhana, which is, who is that supposed to be? Nitya Samadhi Sadhana. There's somebody who... GN. वो GN है, वो GN है. हाँ? It's GN, right? Nitya Samadhi Sadhana. GN Pandey. Right. Wonderful. Wow. You're in a cold Actually, zone. I'm in market. I'm on move. इसलिए वो बंद कर रखा है. Acha, no problem. He's in a cold region, and since Saturday we are going to even colder. We are going to the UK, London, and maybe spend Sunday at the famous Hyde Park in London, which will be cold, I imagine, and then on to USA after that. So even colder in the north of New England. So anyway, so we are looking forward to all of that cold coming up. And I think we are going to take a break for the rest of the year and restart when I come back in January. I mean, you guys are free to keep meeting on the Thursday and, having a satsang. But if I can, I will join. If not, just please go ahead. Okay, on 2 or 3 Thursdays only. And then in January, we'll restart. But so we were there ready, and there were all kinds of things that were not in place. The video wasn't there and the mics weren't there and so on and so forth. And we spent some time getting all that set up. And the way it was, if we had started on time at 6:30, Mahendra would not have been there. But so what happened is there's a Rishi Gurukul near Bangalore. I forget the name of the place. It's not Maralwadi school. There's another school, Rajgiri or something like that. Rajouri, Rajgiri, I don't know. There's another RSVK school, and the kids had all come. The principal brought them to Hriday Sammelan. So they brought them to the हृदय सम्मेलन और वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली कह दिया कि ये बच्चों को भी परफॉर्म करना है, उनके डांस बैले वगैरह. मैंने कहा ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ी देर बाद कर लेंगे. कितने डांस है? बोले 3 डांस है बस आधे घंटे में हो जाएंगे 3 डांस. बोला ठीक है, आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी महेंद्र तो है नहीं, तो और थोड़ा वक्त मिल जाएगा हमें. तो हुआ क्या कि हमने स्टेज सौंप दिया उनको और लेकिन कुछ देर बाद देखा तो सारे बच्चे वो कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये वो सब पहन के तैयार थे. कुछ होंगे 150 बच्चे तो होंगे. और मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा सेटअप है भैया, ये 10 मिनट का डांस मुझे नहीं लग रहा है. मैंने पूछा वापस उनको,
प्रिंसिपल को कि ये कितने कितना चलेगा। बोलते नहीं 2-3 डांस है बस, आधे पौने 1 घंटे में तो हो जाएगा। Then Ramesh ji, who is a trustee there also at RSVK, sent a message कि संजीव जी आप अगर कहते हैं तो मैं बच्चों को रोक देता हूँ और आप अपना ये म्यूज़िक प्रोग्राम करिए और फिर बच्चे बाद में परफॉर्म करेंगे। And I looked at these kids and I said, इनको 1.5-2 घंटे रुकवाना आफ्टर हैविंग डन ऑल द मेकअप कॉस्ट्यूम दिस दैट ऑल द प्रॉप्स, ये तब तैयार करके विंग्स में खड़े हैं सारे, उनको 1.5 घंटे तक रोकना, मतलब हमारा प्रोग्राम भी तो 1.5-2 घंटे चलने वाला था, तो उनको रोकना ठीक नहीं है। सो आई सेड चलो कोई बात नहीं, उनका उनका प्रोग्राम ही सही, पहले उनका प्रोग्राम कर लेते हैं और बाद में हम लोग आ जाएंगे। So we were okay with that, and every time I said yes to everything, these boys were like, संजीव जी हम इतने दूर से आए हैं फ्लाइट लेकर, इतने इतने ये करके, इतने 4 घंटे गाड़ी में आए इधर, और हमारा प्रोग्राम तो अब ऐसे ही पोस्टपोन होते जाने दे रहे हो, ये क्या है? बोला क्या है, जो है सो है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। तो एनीवे, सो 6 सवा 6 को उन्होंने शुरू किया। मैंने बोला ठीक है चलो 7:30। वहाँ पे एक सेलिब्रिटी आ गए, एक सेलिब्रिटी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, बट भरत, ही इज़ अ फेमस एक्टर इन साउथ इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो, वो भरतनाट्यम के बड़े प्रोपोनेंट है। तो उनका परफॉर्मेंस हो गया पहले, बच्चों से पहले। बोला चलो ये भी ठीक है। भरतनाट्यम देख लेते हैं। ही वॉज वेरी गुड परफॉर्मर, दैट वाज वेरी नाइस। ख़त्म हो गया कुछ, और फिर उनकी उनकी आगता स्वागता और उनके ऑल हिज पेइंग द ट्रिब्यूट एंड दिस एंड दैट, वो करते 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 शायद 6:45 तो हो गए। मैंने बोला ठीक है चलो, नहीं प्रिंसिपल सर नहीं हम जल्दी कर लेंगे, बाय 7:45 आई वी विल गिव यू द स्टेज। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। So kids finally started, I think, at 7, and 7:45 हो गया, अभी भी प्रोग्राम चल रहे। 8 o'clock अभी भी प्रोग्राम चल रहे। बस सर अभी 8 o'clock, नाउ लास्ट डांस। अभी एक एक डांस वॉज अ डांस बैले विद द होल स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट वन डांस ऐसा करके चलेगा, ऐसा नहीं, पूरा स्टोरी है डांस में, और अलग अलग स्टैंडर्ड्स के, मतलब बड़े बच्चे, फिर मीडियम, फिर छोटे, वैसे चल रहा था। तो और हर एक डांस के बाद ग्रुप फोटो, टीचर के साथ, कंपोजर के साथ, कोरियोग्राफर के साथ फोटो, फिर दूसरा डांस, फिर वापस शॉल ये वो, फिर फोटो, फिर ये, फिर दूसरा, वैसे करते करते इट वाज 8:15 एंड देन दे सेड नाउ सर लास्ट डांस। last dance last dance and last dance, since they were going smaller to smaller to smaller, इतने छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड बच्चे का लास्ट डांस था। तो मैंने कहा भी चलो अभी छोटे बच्चे, उनको थोड़ी रोक सकते हैं, चलो छोटे बच्चों को भी कर लेने दो। तो वो डांस भी हो गया। बाय द टाइम 8:30 हो गया, then I said turn again and said oh no we forgot there's one more last dance। वैसे करते करते 8:30 8:35 8:40 8:45 and then finally they said okay now dances are over। मैं बोला चलो अभी तो पहुंचेंगे। no then they said again felicitation, शॉल पहना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे एक दूसरे को, और ये चला सिलसिला। we finally got the stage, I think at about 9 or 9:10 something like that, and as grace would have it Medu also showed up। तो मैंने बोला सही है भाई, ये यही तो है करामत, it's because we had to move the program, Medu is also here, now we are in full strength and we go and perform। So Divine timing, हाँ संजीव जी। डिवाइन टाइमिंग। एंड मीन टाइम ये बच्चे तो हैरान हो रहे हैं, बोला सर ये क्या 6 7 8 9, and there were about maybe 300 people at the time that we were supposed to start. By the time 9 o'clock came, there were maybe 100। so
सर 200 लोग चले गए अभी 100। मैं बोला 100 तो है, 100 तो है, क्या फर्क पड़ता है, 100 लोग क्या कम होते हैं। चलो चलो, वील हैव अ ग्रेट टाइम। 9 o'clock वी स्टार्टेड, and and by the time the program was over, we were just in ecstasy, just in joy, just so much fun, so much music, so much love, so much oneness. And of course Medu was there the whole time, so pura program sahi ho gaya. And then afterwards the boys are telling me, संजीव जी लगता है ना ये क्वांटिटी से क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड ड्यूरेशन से भी क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So I said yes, even though we started late, we had 100 people who were glued to their chairs and who were full on participating with everything. And so in that okayness, we were able to come together. And only that is why we were so much at ease. Varna 6 baje ka 9 baje ka program, after traveling so many hours, I mean, without this grounding in okayness, without this grounding in meditation, in oneness, it would have been a disaster. By the time I would have gone on the stage at 9, I would have been so upset with the whole thing that even whatever time was there would have been a waste. So एंड माई मैसेज, और चैलेंज तो कम ही नहीं थे, मतलब कम ही नहीं हो रहे थे। वो माइक का चैलेंज, ये वो तो छोटी छोटी बातें हैं। फाइनली व्हेन वी वेंट ऑन, आई सेड अच्छा हम तो क्या गाएंगे, हिंदी गाने गाएंगे, हिंदी भजन गाएंगे, हिंदी में बातें करेंगे। मैंने वैसे ही पूछा कि कितने लोगों को हिंदी आती है, तो 100 में से 5-10 हाथ ऊपर आए। मैंने बोला मर गए। अभी मैं क्या बात। अच्छा मैं बोला चलो चलो साउथ इंडिया शायद इंग्लिश आती हो, हाउ मेनी पीपल नो इंग्लिश, 5-10, 5-10 हाथ और ऊपर आ गए। मैं बोला मतलब ये 100 में से 80 लोगों को तो ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, और हमें तो हिंदी और अंग्रेजी आती है। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी। So I said, अच्छा चलो, last minute I enrolled one translator who knew Kannada and he knew English and Hindi. So I said, okay, you please translate here and there. I'll tell you when to translate. But my main message at that time, and was that even though we are from different places and we have different languages, there is something जो हमें connect करता है, and that connection transcends all languages, because no matter what your language, the thing that is common for all of us and true for here also, जो बात बिल्कुल एक सामान्य है, वो है silence. Silence is the same in every single language. Whether you are Russian, Chinese, Arabic, Hindi, Sanskrit, silence is the same. The language of silence is the same in all languages. And what you can communicate in silence, you can communicate, it transcends any language. There is no language involved. And the closest thing that then comes close to the silence is music. Again, music has no barrier, no language barrier. In fact, आजकल हम YouTube पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, जो हर महामंत्र जो चैंट कर रहे हैं, जो एक्सटेसी में है, वो वृंदावन में तो होंगे ही, लेकिन भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन है उसके प्रमाण में बहुत कम है। ज़्यादा लोग कौन चैंट कर रहे हैं? रशिया में, यूक्रेन में, चेकोस्लोवाकिया में, लंदन में, यूएसए में, यहाँ वहाँ सारी जगह पे ये चल रहा है। तो because again the language of music is the same regardless of language, and the mantra, the devotion, the surrenderfulness is also the same no matter what the language. तो यही बात हमारे ट्रांसलेटर से थोड़ी सी कम्युनिकेट करवाई, बट द ट्रांसलेटर ऑल्सो हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशन. सो समबडी हु ऑल्सो न्यू कन्नड़ा एंड इंग्लिश सेड नो दैट्स नॉट व्हाट संजीव जी इज सेइंग, ऐसा बोल रहे.
तो ये उनका डिबेट चल रहा है और वैसे बैक एंड फोर्थ, बट आई थिंक इवेंचुअली वी गॉट द मैसेज थ्रू, ऑफ कोर्स, एंड it was just so wonderful. So, and that was the whole purpose of Hriday Sammelan. Because why we set up Hriday Sammelan? Because the everyone is from everywhere, and Guruji went all over the world, from Japan to Dubai and everywhere, and any language in India. There are people who have gone through this program. But why Hriday Sammelan? Because we can all come together at the level of the heart, at the level of the soul, we are all one. So that's why that was the whole purpose of Hriday Sammelan. And we were just so at ease, and we just had such a wonderful time. And that wonderful time was had because of the okayness that was there present throughout. वो ओकेनेस अगर नहीं होती तो वो वननेस भी नहीं आता, वननेस का अनुभव नहीं होता जो जिस हद तक हमने अनुभव किया उधर. वो ओकेनेस थी तो वननेस का भी अनुभव हो गया. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इट इज बिकॉज द वननेस इज देयर इज ओकेनेस. Because at the back of my mind, we are one. There is nothing that anyone needs to say to anybody. There's nothing that I have to share with. That I have to share. ऐसा कुछ है ही नहीं. I have to sing. ऐसा कुछ है ही नहीं. It's just pure choice. Because we are already one. There is nothing that separates us. So there is no compulsion. So because of that understanding of oneness, there was okayness. And because there was okayness, we were able to experience oneness. So that's the beautiful play of okayness and oneness. Both go hand in hand. Because at the level of oneness, everything is okay. सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है. जो भी हो रहा है सही है. It's perfect. क्योंकि if you look at the quality of oneness, of consciousness, वो किसी भी चीज़ को मना नहीं करते हैं. जो भी हो रहा है, welcome, whatever it is. We may have judgments, so this is good, this is bad, this is very bad, this is very good. But oneness, consciousness has no such distinction. Allows, simply allows, allowing all to happen. Whatever is to happen, just happening. That is the quality of oneness. In fact, and that is the definition of okayness. Okay का मतलब क्या है कि whatever is, it's okay. It's not necessarily good, and it's not necessarily bad, but it is okay because that's the way it is. So, that openness of oneness is what creates this experience. And उतना फ्लो में थे कि लोगों ने कहा कि आप कल सुबह भी कंटिन्यू करिए ये जो आपका जो प्रोग्राम है. इट इज़ नॉट ऑन द स्केड्यूल, बट लेट अस हैव वन मोर सेशन इन द मॉर्निंग ऑल्सो बिकॉज यू आर स्टिल देयर टिल द आफ्टरनून. सो वी सेड ओके. तो इन फैक्ट इवन दो वी वर टू हैव इट अर्लियर एंड ऑल दैट और ख़त्म हो जाता, वी कंटिन्यूड द नेक्स्ट मॉर्निंग. And that principal whose school and everything, he was the one who was managing the whole stage. So as soon as he saw me in the morning, he was like, please up stage leave. Because and of course when we went on stage, that even the first evening, the पहली बात हमने यही बताई बच्चों को कि अरे you are so great, so beautiful, and we are so glad that you performed so well, and it was such a wonderful program and all that. और मैं बच्चों की एक्नॉलेज कर रहा हूँ, और सुधर ये बच्चे, हमारे बच्चे देख रहे हैं मुझे कि ये बच्चों की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम 3 घंटे लेट हो गया. एंड हियर यू आर सिटिंग अराउंड प्रेजिंग द किड्स. आई सेड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद द टैलेंट एंड द एफर्ट एंड द जो कोरियोग्राफी वगैरह जो उन्होंने करके दिखाई, दैट वाज सिंपली मार्वेलस for a group of school children to put up. Very beautiful. So next morning also we had that satsang, and then all of us, forget the morning, wo raat ko hi after the program there was an after the program party, of course.
and Manoj ji and so many of us from Mumbai, everyone got together and kept the party going till late at night with all kinds of music and all of that. And way back on the bus also, uh, one party continued. So experiencing that oneness with everyone through the music, with the music, and that okayness with whatever was going on. Everything just flowed so flawlessly, so beautifully. Even though there were all kinds of challenges, with flight delays or some flights were early, bus ko pahunchna hai, but it was all just a wonderful, wonderful journey. And especially, Manoj ji was there, and so uh, he and I, of course, we have led so many courses and retreats and all that together long ago. Long ago means 5-10 years ago, we used to lead so many things together. And so we got a chance to really spend time one on one all through the bus ride, 4-5 hours, and then the plane ride and all of that. So really, really, reconnected. So one of the suggestions that something came to me that why don't we conduct something together again? And so watch out for that announcement coming up for March, where Manoj ji and I will be leading all of us in a surprise event. It's going to be a 3-day event. वो event क्या है कैसा है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट मार्च में दिल थाम कर तैयार हो जाइए. All I'll tell you is not a scope camp. It's not a retreat. It's something else. So look out. Here we come. So that's about what I wanted to share about this program. It was just marvelous. So, any thoughts, any questions, or anything you would like to share or ask about this or about anything else? Yes. Yeah, one sec, Purushottam. Manoj Alim Chandani asking for dates for March. Date abhi tak fix nahi hui hai. As soon as it is fixed, we'll let you know. हाँ पुरुषोत्तम जी. दो बातें शेयर करना है मुझे. एक तो मनोज जी के जो SMS रहते हैं डेली, वो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से. तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने वो वाव मोमेंट्स लिखते ना, उसमें उन्होंने जो लिखा था, करेक्ट, अभी बताया वो एक था, वाव, आई लव संजू भाई द वे यू टॉक नाउ इट इज. करेक्ट, ढंग से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. राइट या. और आज का जो है वो टाइटल देखा मैंने कि वननेस एंड ओकेनेस इज वन. तो थोड़ी देर तक मैं उसके साथ में बोला पता नहीं अब ये कैसे आर्टिकुलेट करते हैं संजू जी, लेकिन जिस ढंग से आया वंडरफुल. बहुत ही मतलब इतना अच्छा. एक्चुअल में वो वननेस और ओकेनेस उसका रिश्ता क्या है और वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा है. करेक्ट. बहुत ही आनंद है. मतलब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग है. थैंक यू. राइट. या उसको अगर दोनों को नाम देना है या व्यक्ति देने हैं तो वो ओकेनेस एंड वननेस इक्वल्स टू मनोज एंड संजीव. वन इज ओकेनेस, वन इज वननेस. एंड सो हुआ करता था कि जब भी हम साथ में लेते थे क्लासेस तो देयर वाज वन सेक्शन कॉल्ड टीयर्स एंड लाफ्टर. एंड ऑफ कोर्स I can laugh and I can cry, and of course Manoj ji can also laugh and he can also cry. But expertise अगर core competency देखी जाए, core competency अगर देखते हैं तो core competency of mine is tears and core competency of Manoj ji is laughter. So tears and laughter is also Manjo and Sanjo. So वैसा है. So we really, it was wonderful. Okayness and oneness. And he also shared a lot about his Padyatra and all of that, and all his experiences with that he recently went in. And बहुत मज़ा आया, कितना मज़ा आया.
And he shared one poem actually afterwards. That also, I think, is on one of his blogs, and he shared it on the group. Let me see if I can find it. And I really so enjoyed that poem. And, just see how all of you, all of us can resonate with this idea. और मुझे कल एक सपना भी आया, which I'll tell you after this poem. The title of the poem is Insanity. Have I gone insane? क्या मैं पागल हो गया? Okay. So, oh, what a wonderful night. I'm flying high like a kite. The moon is shining so bright. It has made my heart dance in delight. The cool wind touches my soft body. How God has made such beauty. I'm simply amazed at this. I'm in the middle of a vast open space, both within and without, both inside and outside. Life is such a beautiful gift. I experience that we are all nomads, coming from I don't know where, just come to enjoy this beauty, going to I don't know where. Sometimes I wonder how come I missed all this earlier. Life is such a great opportunity to wander, to wonder. I am just amazed with this beauty. Life is nothing but a thunder. I don't know what I am writing, but something in me is itching and biting. Words are coming from nowhere. I guess you got to be somewhere. These words may not make much sense, but what really matters is that I am overjoyed. My pen is just flowing. I don't feel like stopping. I feel poetry is oozing out. It also feels like some sort of madness. Oh, have I become a poet or have I gone insane? Insane, yes, that's what has happened. Insane with this incredible nature, insane with this uncountable stars. I don't know what is happening, but it's lovely to go insane. Oh God, I'm terribly in love with you. I'm terribly in love with everyone. I'm crazily in love with everything. And I am madly in love with myself. So this is the kind of madness. And just last night I had a dream in which there was a whole ceremony going on with a lot of Buddhist monks were there, and I was also present, but I was sitting very, like in meditation and sitting straight and like that. And suddenly I said, I need to just drop even this sitting straight and all. Just drop it. And I just fell off my chair, and I was just lying flat, prostrate on the ground, like just surrendering, like the body kind of just dropping away. That feeling of that. It was just beautiful. That going insane. I felt like I was just not following all the norms. It was some big gathering with a lot of people. ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे रुकना चाहिए, वैसे. And I was just simply letting go of all those, uh, you know, constraints and just going mad. And that's related to this poem, Am I Going Insane? Yes. What else? Kali, anything you'd like to share or ask? No, but I really liked your story. Okay. Your performance, it was great. Right. The story of the program, right? Yeah. Yeah. Okay, I have to add something. Sure. So on 17th of December, you're not going to be with us. Oh, You're yeah. going to be in London. So from Yes. all of us, a small tikka, Oh, okay. a Thank you. garden around Oh, you, thank you. which I made. Oh, wow. Let's all of us sing. Happy birthday to Thank you. you. Happy birthday to you. Me. Happy Happy birthday, birthday dear to this Sanjivji. body.
Happy birthday to this body. Not just to this body, to the soul too. To the soul. To But the soul was root. never born. The soul आपकी never रूह had a को भी, birthday. आपकी रूह को भी happy, 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 happy. happy, 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 Thank you happy, so much. happy, Thank you. happy, 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 No. happy, Right. happy. Great. Great, great. Thank you. Thank you all so much. Thank you. Wonderful. Right. So a Great. lot of love to you. Do enjoy your trip with Harsha and with your children, and come Yeah. back with a thunder, Yes, come going back with the more thunder. insane and mad, Going more insane. Absolutely. More insane. More insane. bringing That is more of the yeah. unusual and out take of the box. So हाँ and so take us to your insanity. yes, taken to the साथ में जाएंगे जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे to insanity. So someone asked me, Sanjeev ji, सिर्फ three weeks you are going in that short time के लिए क्या reason है इतना short? I said एक reason नहीं है 6 reason है 6 reasons. Wait, Maybe you can't see you brother. can put it up more. The light is coming. That is No, why. it's not. Ah, Ah, here, no, here. no, Laz. This is perfect. Yeah. I have six reasons to go. Yeah, these are all the grandkids. 6 grandkids. So for Christmas, so we have 6 good reasons to go. Great. Chitra. I have 8 Hello. grandkids. What is it? I have 8 grandkids. 8 grandkids. Wow. Wow. Great. Congratulations. Great. Yes, Chitra. How are you? I'm fine, sir. Wonderful. Happy birthday. What a great day to join. Good that I joined in Yes. the last minute at least. हाँ, thank you, thank you. Thank you. Happy चलो journey. ये बहाने आज से ही शुरू हो गया हैप्पी बर्थडे. हाँ. Great, great, great. Yeah, wonderful. So आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और रादर बधाइयाँ तो हम सबको भी कि आप हमें मिले. आज के दिन आपका अवतरण हुआ और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपको हम पाया. आपको छूकर हवा जो आती है वो भी ऐसी गुनगुनाती है कि कैलेंडर की तारीख रोज बदलने की चेष्टा करती है, फड़फड़ाती है, लेकिन आपके साथ जब आती है ना तो वो भी नाचने और गाने लग जाती है. क्या बात है. उम्र है कि पढ़ना भूल जाती है. उम्र है कि पढ़ना भूल जाती है. उम्र है कि पढ़ना भूल जाती है. क्या बात. बढ़िया बढ़िया, क्या बात है. वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मेरी कविता है कि पता नहीं क्यों आपके संग वो अपने आप बस बनती चली जाती है. सिलसिला इन बातों का यूं ही चलता रहे. करेक्ट. सिलसिला इन बातों का यूं ही चलता रहे. ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे. वाह 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 वाह, क्या बात है. बहुत खूब. क्या बहुत खूब. इन बातों का चलता रहे, ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे. क्या बात है. बढ़िया. बातों का सिलसिला है लेकिन बात कुछ नहीं है. वाह. बस आपके सन्मुख बैठे रहने में भी आनंद है. वंडरफुल वंडरफुल. द कॉमन लैंग्वेज ऑफ साइलेंस एंड लव. दैट्स हाँ, वो जो आप कह रहे थे ना कि भाषा वही. जो है, भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती वहां पर. आवश्यकता नहीं रहती. बिल्कुल. वंडरफुल वंडरफुल. ग्रेट. ठीक है, तो मिलते रहेंगे, मिलेंगे. एंड एक गाना गाइए ना, कुछ ना गाना. कहो, अच्छा. कुछ ना कहो. हाँ, वो तो जो निर्भार वाली कविता सुनाई ना आपने, कौन सी? अभी निर्भार, वो जो हवा में उड़ रहे हैं सब कुछ और हाँ क्या हाँ क्या हाँ आपने सुनाया हाँ है ना, हाँ. तो उससे कुछ ताल्लुक आपके जन्मदिन का. वाह वाह एकदम. या
मेरी गिटार किधर है भैया? गिटार अंदर है। अच्छा, और आ एक लेके चले ऐसे गगन के तले ना, क्या है वो? ना गम भी ना हो, गम भी न आंसू भी ना हो, हो, आंसू भी न हो, बस बस प्यार प्यार ही प्यार। मैं लेके प्यार। चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। लिरिक्स। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। कहीं धूप मिले, कहीं छाँव खिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। नम्री सिकनी हंसती वो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। I put सपनों में पली हंसती, हाँ, ये क्या है सब? सपनों में पली। No, no, no. हाँ, नहीं नहीं, there is a one. What is the actual full antra? This is part of it. No. चलो, ये कली जहाँ, का नाम, इसी नाम पे कली का नाम भी आ गया। हाँ, जहाँ सपनों दूर में नजर, पली हंसती वो कली, जहाँ शाम सुहानी डले। What is it? The या last. There's one more last stanza. सपनों के ऐसे जहाँ में। हाँ, सपनों के ऐसे जहाँ में। 1 minute. सपनों के ऐसे जहाँ में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहीं सो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। हम जाके वहीं सो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। सपनों में पली I've written the lyrics. कहीं बैर ना हो, कोई हाँ, गैर ना गैर हो, ना हो। कोई गैर ना हो। हाँ, कहीं बैर ना हो, कहीं कोई गैर ना हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। एक वैसा गगन दिख रहा है पीछे, वैसे दीवार है लेकिन नीला अंबर ही लग रहा है पीछे। जीएन पांडे के पीछे ब्लू गगन हाँ, कहीं दूर गगन की ये ब्लू छांव में गगन है, यस। और हम दोनों उड़ रहे हैं उस गगन उड़ में रहे हो आपके उसमें। साथ। नमस्ते वंदना जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपको मैं भी 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ जन्मदिन पे। जरूर। इरशाद इरशाद, बोलिए हुजूर।
उस दिन मोर भी नाचे थे झूम के, उस दिन भौरे भी गुनगुनाए आए थे थे खुल के। खुल के, क्या बात है। उस दिन बदरिया भी बरसी थी झूम के। क्या बात है। और सुगंधित पवन भी वही थी मदहोश होकर। क्या बात है। क्योंकि उस दिन श्री संजीव जी जन्मे थे। वाह 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 वाह। थैंक यू आपको वंडरफुल। बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही हमारे साथ सालों तक साथ रहे, हमारे साथ सहस्त्र वर्षों तक। हाँ, और आपके गुणों को हम भी धारण करें। बिल्कुल ओकेनेस में रहने बिल्कुल, वाला। सभी आपके ही है, आप ही के गुण है। एनी ये टाइम। पांडे जी की जोड़ी है ना, एक दूसरे के लिए बनी है। दोनों बड़े शायर है, हाँ, दोनों शायर है, दोनों शायर। दोनों एक दूसरे के लिए बने लास्ट टाइम प्रकाश जी और लाइन लिखी थी ना, मैंने कहा था मेरा हमदम है, मेरा दोस्त, मेरा हम नवा, जो बात उसमें है वो तुम्हारी शराब में कहा। शराब में कहा। मैं तो वंडरफुल ये कहूंगा वंडरफुल जो पांडे बात जी। तुझ में है वो किसी में कहा। क्या बात है, क्या बात है। शराबी क्यों, कहीं नहीं है, कहीं साहब, नहीं है। बिल्कुल क्या बात है, बहुत सही है, बहुत सही। बिल्कुल, सभी सभी, एवरी ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक, वंडरफुल, लवेबल एंड डिवाइन। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और हाँ। जिस क्षण में संजीव जी हमारे साथ होते हैं वो क्षण जिंदगी के नाम होती है। वाह वाह वाह, क्या बात बात है है। पांडे जी, बहुत बढ़िया। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रकाश जी, आपके लिए वो वीडियो भेजा था मैंने आपकी बर्थडे पर, वो मिला कि नहीं, आपने सुना कि नहीं? प्रकाश जी, उन्होंने हेडफोन हो ही गए निकाल दिए। हैं इस समय। प्रकाश जी है ना, उतने उतने उत्साह वाले एक स्टूडेंट कहो या जो भी पार्टिसिपेंट है कि वो 2-2 3-3 जूम एक साथ सुनते हैं। क्या बात है। यत्र तत्र उस सर्वत्र तरफ डीवाईल चल रहा है, सारी एक कुछ तरफ सब जगह यूट्यूब चल मौजूद रहा है, एक तरफ मनोज जी है, एक तरफ संजीव जी, एक तरफ कुछ और, एक तरफ यूट्यूब, सब साथ में चलता है उनका। मैंने वही कहा था उनको कि यू आर द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ ऑल दिस है। नॉलेज। क्या बात। वंडरफुल। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। एंड हैप्पी जर्नी ऑफ कोर्स। आप बढ़िया यात्रा, आनंद में सदा आनंद में रहे।